topic. First, we will revise whatever the things we have covered in previous sessions. So कोई मुझे बता सकता है what is the primary key? Yesterday only we have given the primary key for our employee ID. So what is the use case of our primary key? Why we use our primary key? Primary key is the key field. Yes, it is a key field, but why we use the employee ID as a primary key? Yes, so primary key is basically the unique ID. So for each person in our database table, for each entry in our database tables must be have the unique ID. So for that we make our employee ID as a primary key. So after that we have created our database tables, and after creating our database tables we see how to insert the data in our database table. So there are the multiple options we can insert the data in our database tables, like SE16N is there, sorry, SE16N is there, SE16 is there, SE11 is there. So these are the possible T codes we can insert the data, but it is a best way to maintain the record. It's TMG. So कोई मुझे TMG का T code बता सकता है? Yesterday only we have saw the TMG to how to which one? SM30. Yes, SM30 is the T code for creating to maintaining the data in the TMG. So TMG's full form is table maintenance generator, which is the best way to maintain the data. For end user requirement, we create the TMGs. So TMGs are used to maintain the multiple records and multiple data in our database tables. So whenever we delete our TMG, our data will not get deleted. Only TMG will get deleted. In SM30, we can insert our data. You can see deleting the TMG, never be delete the table data. After that, there are the some prerequisite while we creating our TMG. There will be the some prerequisite. Let's suppose this table we have created. I will open it my change mode. If my table is in display mode, and I will go to utilities, I will go to table maintenance generator. You can see I am not having the option of deleting TMG or creating new TMG. So our table must be into the change mode, and our table must be in a active mode. Then only I can able to create the TMG, and I am table is having display and maintenance allowed. So then only I can able to create my TMG. So now my TMG is already created. I will go to the SC38, sorry, SM30. SM30. My TMG is already created and already maintained. So if I have, let's suppose, I have added some field here, address. I will create Z address data element. I will double click on this. So first of all, I will tell you about one more thing. So while we creating the, ये screen दिख रही है सबको? Yes. There are the two ways. There are the two ways to create a database table in SAP. So for that two ways, we can call it as a first, we called it as a top-down approach. First one, we called it as a top-down approach. Top-down approach. And second, we called it as a bottom-down approach. Whenever interviewer will ask you about हम internal tables कैसे create कर सकते हैं, तो you can say while first we create the domain data element, then we go for creating our database table. And second thing, we can first create our database table, maintain our delivery class, maintain our display and maintenance and data browsers, and then we will go for data elements. So how these two approaches will work? So there are the two approaches, top-down approach and bottom-down approach. So in top-down approach, let's suppose this is my top-down approach.
top down approach. This is my bottom down approach. यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच में फर्स्ट वी क्रिएट आवर डेटाबेस टेबल, देन वी क्रिएट आवर डेटा एलिमेंट. उसके बाद हम करते हैं डोमेन. इन टॉप डाउन अप्रोच हम पहले डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसके बाद डेटा एलिमेंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद डोमेन क्रिएट करते हैं. बॉटम डाउन अप्रोच हमने ऑलरेडी देखा है, पहले डोमेन क्रिएट करते हैं, उसके बाद डेटा एलिमेंट क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हम डेटाबेस टेबल क्रिएट करते हैं. उसका उल्टा करते हैं बस. डेटाबेस टेबल हमने अभी तक ये अप्रोच देखा था, बॉटम डाउन अप्रोच देखा था. बट टॉप डाउन अप्रोच में क्या पहले क्रिएट करते हैं, लेट सपोज हमने ऑलरेडी दिस डेटाबेस इज ऑलरेडी क्रिएटेड. सो इन टॉप डाउन अप्रोचेस वी क्रिएट वन वन फील्ड. So first I will add my field. I will create my data element. I will give the Z add D element. I will double click on this. They will ask data element is not available. You want to create that data element? Yes, I want to create data element. Here I will add address. Here I will give the domain Z employee address domain. So our domain is not created. I will double click on this domain. They will tell Z address is already created. Okay, we will create one more 01. I will double click on this. I will yes. Okay, we need to save this one. First, we need to save our data element. The domain is not available. I will go for creating the domain address. I will give the data type. Let's suppose I will give the character. I will give the character 40. I will save it. Save into the local objects as of now. Check it. Activate it. I will go back. I will double click on data element. Okay, that is not created. First thing we need to create our data element. I will save my data element first. I will give the address. I will save it. So instead of package, we will store it. I will give the field label. Let's suppose address, address, address. I will pass the address. Press enter. Will go. I will give the data element Z element. I will double click on this. Yes, yes. Here I will add address. I will give the character. I will give the length 40. I will save it. Save, save. Check it. Activate it. Now go back. Now save it. Check it. Activate it. Now our data. अभी हमारा डेटा एलिमेंट एक्टिव नहीं था, बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो टेबल था वहां पर हमारी फील्ड नहीं दिखा रहे थे. So now whenever I will go back, you can see address character data element is active now. Character 40 is coming, and at the description address is coming. So I will check it. Address is reserved. Okay, it is already reserved. So I will add address. I will check it now. Okay, now you can see there is a no error. You can see हमारी
यूजिंग द टॉप डाउन अप्रोच। हमने पहले टेबल क्रिएट किया, उसमें देन वी ऐड आवर फील्ड। गॉट इट? टॉप डाउन अप्रोच कैसे वर्क होता है? किसी को कुछ डाउट्स है यहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच में? पहले हमने बॉटम डाउन अप्रोच देखा था, फर्स्ट वी क्रिएट डोमेन, उसके बाद डेटा एलिमेंट एंड देन वी क्रिएट आवर फील्ड। बट टॉप डाउन में हम पहले फील्ड क्रिएट करते हैं, फिर डेटा एलिमेंट, फिर डोमेन। बस इसी का उल्टा जाते हैं, बस इसी का उल्टा चला जाते हैं। यहाँ पर ऐसे उल्टा चला जाते हैं बस। बॉटम डाउन में एंड टॉप डाउन में ऐसे आते हैं। तो दैट इज द थिंग ओनली वी कैन डू इन टॉप डाउन एंड बॉटम डाउन अप्रोच। किसी को डाउट्स है यहाँ पर कुछ इसमें? तर तुमचा आवाज येत नाही. हॅलो, अब आ रहा है आवाज? आता आवाज येतोय सगळ्यांना? ऍक्च्युली मी अनम्यूट वर होतो, म्यूट वर होतो. सो बेसिकली आपल्याकडे टीएमजी मध्ये काय एरर येतो? इनकन्सिस्टन्सीचा एरर येतो. व्हाईल आय ओपन माय टीएमजी SM30, आई विल गो फॉर मेंटेन. नाउ यू कैन सी अभी इनकन्सिस्टेंसी का एरर नहीं आ रहा है। बट इनकन्सिस्टेंसी का एरर क्यों आता है? व्हेन वी ऐड, हमारा जो टेबल मेंटेनेंस जनरेटर के रिकॉर्ड्स है और हमारा जो टेबल है उसमें जो फील्ड्स है वो मैच नहीं हो रही, सो बिकॉज ऑफ दैट इनकन्सिस्टेंट एरर इज कमिंग. बट इट्स फाइन. नाउ आवर टेबल इज इन एक्टिव मोड, but I have added my address field. But in my TMG, I am not able to see my address field. You can see at the last manager field is there. This is the manager field, salary field, currency field. All the fields are there. Which TMG we have open? Which table we open? Let's see. तो हमारी जो लास्ट की फील्ड है, एड्रेस फील्ड इज नॉट कमिंग. तो वी नीड टू मेंटेन दैट फील्ड. अगर हमें मेंटेन करनी है तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू delete our TMG and then we can maintain to. हमारा टेबल इज नॉट इन एक्टिव मोड. We need to active our table. Only warnings. I ignore the warnings. Now I will try to open it again. We will check हमारा error आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है. Now I will utilities. I will table maintenance generator. I will delete this TMG first, and I will again create my TMG. तो उसके बाद हमारी जो एड्रेस की फील्ड है, दैट एड्रेस की फील्ड विल कम. It is taking time to delete. Okay. So whenever you can see it here, there will be the note. Whenever you add new column and new field after generating the TMG, newly added field is not automatically appears into the table maintenance generator. So for that, we need to delete our TMG and generate it again. So this process we are doing as of now. हमें भी ये process delete कर रहे हैं. After deleting the TMG, हमारा data delete नहीं होता है. To delete the TMG, open the table into the change mode. Otherwise, हमारा delete button will not visible. हमने delete कर दिया. Now I will use the one step. I will go for find screen. Okay, here I will remove it. I will go for find screen. I will enter. I will generate. It is taking a time.
टीएमजी क्रिएट करके देखे सब लोगों ने? यस। उसमें कुछ एरर्स वगैरह, फंक्शन मॉड्यूल्स हम अगर टेबल दे रहे तो वहां पर किसी को कुछ एरर्स वगैरह आए? क्योंकि कभी कभी फंक्शन मॉड्यूल एक्टिवेट नहीं होता, वो भी एरर आता है कभी कभी। किसी को कुछ एरर्स आए उस टाइप में या नहीं आए किसी नहीं, को? कुछ एरर नहीं है। अच्छा, नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। दैट इज अ ग्रेट थिंग। सिर्फ एक ही एरर आया था, टेबल एक्टिव नहीं किया था मैंने। अच्छा, तो बस। तो जितना एरर्स आएंगे बस इट बाकी। इज अ गुड थिंग ओनली, हम्म। बिकॉज आगे जाके वही चीज हमें काम में आने वाली है, एरर्स। तो आई विल गो बैक, check in SN30, go for maintain, and I will go for new entries. And I will add one more entry. Let's suppose 109. 109. I will give the name. Let's suppose Pranav. Give the manager Ram. I will give the salary 1000. Give the current 100. I will give the USD. And I will add the address Pune. Okay. हमारी टीएमजी में नई फील्ड ऐड होगी, राइट? बट पहले हमारी टीएमजी में ये फील्ड नहीं थी, एड्रेस फील्ड नहीं थी। आई विल सेव इट, आई विल गो बैक एंड आई विल चेक माई टेबल, टेबल कंटेंट, execute it. I will scroll it. You can see address field is coming. दिख रही है सभी को? जब तक आप टीएमजी डिलीट करके फिर से रीजनरेट नहीं करते हो तब तक आपका जो फील्ड है तब तक टीएमजी में दिखाई नहीं देगा। वट एवर द चेंजेस यू हैव डन इन योर डेटाबेस टेबल्स वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे इफ यू क्रिएटेड बिफोर द चेंजेस टीएमजी क्रिएट की होंगी। So that's all about the TMGs, table maintenance generator. So after that we will move forward to the next point for the project detail table. So there will be the in the SAP there will be the concepts of header table and item table, right? In the first lecture we have seen the header tables क्या होते हैं और item tables क्या होते हैं, right? Everybody is aware about the header table and item table. कोई बताएगा मुझे header table क्या होता है और item table क्या होता है? हेलो? यस सर। यस मोना? सो हेड Actually your voice is breaking. टेबल हैज द Okay, fine. Actually your voice is breaking so much, that's fine. So basically header table में क्या होता है? इट इज अ मेन टेबल, वहां पर जो अपने आइटम के रिलेटेड जो भी मेन इंफॉर्मेशन होती है दैट इंफॉर्मेशन वी स्टोर्ड इन आवर हेडर टेबल। एंड जो आइटम टेबल होता है उसमें वी स्टोर्ड आवर आइटम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो भी डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन होती है वो वी कैन स्टोर इन टू आवर आइटम टेबल। जैसे कि वी आर हैविंग द रिक्वायरमेंट, we are having the requirement, we have to create our employee table and project detail table। तो प्रोजेक्ट डिटेल में हम एम्प्लॉय आईडी के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स असाइन हुए हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स असाइन हुए हैं, वी कैन स्टोर इट इनटू द प्रोजेक्ट डिटेल टेबल। सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टेबल, प्रोजेक्ट डिटेल टेबल। So first thing, already employee ID we have created. This employee ID we have already created. So now I will go for creating my project ID. So for my project ID, I will create my domain and data element. I will create my domain, Z project ID. I will give the domain. I will go for create. I will go for the project ID, and I will give the type whatever the requirement we have. Project ID के लिए character 3. Okay. I will give the character. I will give the 3. I will save it into the package. Save it. Check it. Activate it. Now our domain is created. I will create the data type. I will copy this. I will create the data element. I will give the DE. Go for create. I will choose the first radio button for creating the data element. I will go for next. Here I will give the project ID. Project ID. I will give the domain name. In field label, I will give the project ID. After that, I will write the project ID.
project ID and project ID. I will save it, check it. There is no errors. I will activate it. Okay, now for the किसके लिए क्रिएट करना पड़ेगा अभी मुझे कोई बताएगा किसके लिए क्रिएट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट आईडी के लिए क्रिएट किया एम्प्लॉय आईडी के लिए क्रिएट किया एम्प्लॉय नेम इज ऑलरेडी वी project हैव name. नाउ वी नीड टू क्रिएट फॉर प्रोजेक्ट नेम so I will create for name go for create project name review the what is the length they given character 40 so I will use the character I will use the 40 I will save it I will check it activate it I will go back I will go for data element here I will pass name go for create I will choose the data element after that I will use the project name I will give the data element here I will pass the domain with name I will give the project name project name project name project name save it check it activate it go back now we can create our database table instead of header I will pass the item table for my project and I will go for create I will give the short description project details item table in delivery class I will pass the a application table and master and transaction data I will display and maintenance allowed in the field what the fields they want the client number what is the client number field ये बताएगा मुझे client number field क्या है MANDT. yes MANDT field is there for the client our table will become the client dependent we'll make it as a primary key after that we want the employee ID I will give the data element of that employee ID after that we are having the project ID I will pass the data element of project ID said project ID data element no that is not the data element I guess so I will check what is the data element we have created it's 11 okay. This data element we have created after that I will pass project name I will pass the data element for that I will save it तो उसके बाद what is the procedure I need to do for creating database table इसके बाद मुझे कहाँ पर जाना चाहिए Technical settings. yes in technical settings I will maintain my data class where my actual data will get stored I will maintain APPL0 APPL0 means master data that data will use our frequently but changes very rarely in size category I will maintain 0 because not more than 500 or 100 records we have maintaining our database table I will save it I will go back here we haven't maintained any our currency and quantity field so there will be the no requirement to go and currency and quantity field so we can check what is the primary key we have employee ID and project ID I make it as a employee ID and project ID as a primary key I will save it check my table only 8 warnings are there I will go back I will activate my table only warnings are there I will ignore my warning so now you can see this is the ये जो फील्ड है ये कहाँ कौन से टेबल से आ रही है हमारी एम्प्लॉय आईडी जो फील्ड है वो कौन से टेबल से आ रही है फ्रॉम आवर Header. हेडर टेबल so we have to give the foreign key relationship
for our table. तो जब भी हम foreign की relationship देते हैं for between two tables, there will be the requirement. Since we already know every records for the employee table header, we can have the multiple records in the project details. जैसे कि हमारा एक employee ID के लिए हम multiple projects assign करने वाले, right? So the purpose of that, हमारा दोनों दोनों जो tables है, they must be linked with each other. हमारे जो दोनों tables, this both the tables, ये दोनों tables we need to merge with each other. उनको एक link देना है. From which table, from which field we can give the link? From which field? From this employee ID field, we can link both the table. We can link our both the table using these two fields. We can link using these two fields. We can link our both the table employee ID, because this is the common field we are having in our both the table. So there will be the prerequisite for foreign key relationship. Foreign key relationship, there will be the prerequisite. Table should have the common key, or our common key between the both of table will be the employee ID. हमारी common key कौन सी है? Employee ID है. So now, what is the foreign key relationship? Foreign key relationship means what? It is a primary key from our main table. So foreign key कब बन जाती है? Foreign key कब बनती है? I will explain you here only. So this is my primary key. As of now, this is my head table. We can call it is a primary key. But when this primary key comes into our secondary table, जब हमारे secondary tables में आती है, तो this primary key we called it as a foreign key there. In this table, this primary key we called it as a foreign key. So whenever interviewer will ask you about the definition of foreign key is nothing but the reference primary key. Foreign key is nothing. Write down this definition. Foreign key is nothing but the reference primary key from our header table and from an other table, you can say. And for primary key, there will be the definition. It is a holds the unique record. Primary key is used to holds the unique record in our database table. So these are the definition of our primary key and foreign key. So foreign key we can use for our giving the relationship between two tables. So now we will give the foreign key relationship. So this field is common. This field is common in my table. So I will select it, and you can see there is a key button is there. Here you can see it. Here it is a key button is there. There is a key button. Here is a key button is there. On this key button, whenever I press on this key button, I can able to give my foreign key. When I click on, I can select my first, what is the common field I have, and I will click on this. And they will ask me for the check table. So check table means what? From which table I need to check that field. It will asking what for the check table. So हमारा check table कौन सा होगा? From which table we have taken our that employee ID? हम अभी project detail table में. As of now we are into this project detail table, and we are giving this relationship of foreign key. But they will ask me for the check table. So this field from which table I need to check. मुझे कौन से टेबल से चेक करनी पड़ेगी? मला कोणत्या टेबल मधून चेक करावं लागेल हे field? Hello. Header table, sir. Yes, from header table I need to check. So in my check table, I will pass my header table. So here I will pass my header table. Z header employee EMP database. Right. I will press enter. This is not the table. We'll check again. कौन सा table है हमारा? This is my table name. I will copy this table name. I will paste it here, and I will click on generate proposal, or otherwise I will press the enter. I will go for S. You can see they will give us the common field. You can see from this header tables comes as the check table. हमारा जो header table it comes as the check table, and हमारा जो secondary table है it comes as a foreign key table. वहाँ पर हम relationship दे रहे हैं. So in MNDT field is common in both the tables. हमारे client dependent table है, so both the table is having the MNDT field common, and for both the tables
वी आर हैविंग द एम्प्लॉय आईडी फील्ड कॉमन विच वी हैव रिक्वायर्ड। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें ये जो एम्प्लॉय आईडी फील्ड है वो देनी है। वी हैव टू गिव द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एम्प्लॉय आईडी फील्ड। सो एज हमने चेक टेबल्स itself given us the what is the common field we have. You can see employee ID is there, employee ID is there. So here I can build our relationship with our header table and check table, or our foreign key tables. So our item table, foreign key table, we can call it as the item table. So now after that, in semantic attribute, you can see cardinality is there. Cardinality is there. So what is this cardinality? Cardinality is gives us the how many records in our check tables will be dependent on our foreign key table or our item table. Let's suppose there will be the, when I go for the F4 help, when I go for the F4 help, there I am having the two options, 1 and C. Entry in check table must exist. Entry in check table can be exist. So if I go for the left side cardinality, left side में क्या है, हमारा check table है. Check table means हमारा header table है. So in my header table, entry must be exist और in my entry can be exist. तो हमारा employee ID हमारे header table में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. तो फॉर गिविंग माई, लेट सपोज देयर विल बी द कंपनी, एक कंपनी है और वहां पर लेट सपोज 100 एम्प्लॉयज आर देयर. तो उन 100 एम्प्लॉयज को हम प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स दैट 100 पीपल. सो उस हेडर टेबल में अगर एम्प्लॉय आईडी ही नहीं होगा तो कैन आई गिव द प्रोजेक्ट्स टू दैट एम्प्लॉय आईडी? क्या मैं उस एम्प्लॉय आईडी को प्रोजेक्ट दे पाऊंगा? नहीं। नहीं. तो एंट्री इन चेक टेबल मस्ट बी एग्जिस्ट. हमारी एंट्री वहां पर होनी ही चाहिए, हमारे हेडर टेबल में एंट्री होनी ही चाहिए, राइट? कैन बी एग्जिस्ट मतलब अगर वहां पर एम्प्लॉय आईडी नहीं हुआ तो भी हम प्रोजेक्ट असाइन करेंगे. इज दैट पॉसिबल? अगर एम्प्लॉय आईडी नहीं होगा तो हम प्रोजेक्ट असाइन करेंगे तो इट विल गेट गोट द रॉन्ग एंट्री हमारे पास. वी कैन डू दैट थिंग एज वेल, बट हमारा जो डेटा जाएगा वो रॉन्ग जाएगा. सो बिकॉज ऑफ दैट वी नीड टू टेक द प्रिकॉशन. आई विल चूज द वन. सो हेडर टेबल में हमारा एम्प्लॉय आईडी होगा तो देन ओनली आई कैन असाइन द प्रोजेक्ट. देन ओनली आई कैन असाइन द प्रोजेक्ट टू दैट एम्प्लॉय आईडी. And in second, I will go for the F4 help. I am having the multiple options. So what is this multiple options we have? CN is there. Each record in check table, हमारे check table में जितने भी records है, any dependent records we have has any dependent records. मतलब कोई भी dependent records हो सकता है. C is there. Each record in check table has maximum one independent record. Maximum one dependent record होना चाहिए. Each records in my check table at least one dependent record. यहाँ पर एक ही होना चाहिए, यहाँ पर at least one होना चाहिए, एक से ज्यादा चलेंगे. One is there. Each records in my check table exactly one dependent record. So what is 1:1? जब मैं 1:1 लिखूंगा तो मेरे हेडर टेबल्स का जो एम्प्लॉय आईडी है उसके लिए मैं एक ही प्रोजेक्ट आईडी दे पाऊंगा. इफ आई विल गो फॉर 1:n तो मेरे हेडर टेबल्स का जो एम्प्लॉय आईडी है उसके लिए मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स असाइन कर सकता हूँ. यू कैन सी ईच records इन माई चेक टेबल एटलीस्ट वन डिपेंडेंट रिकॉर्ड. एटलीस्ट एक तो होना चाहिए. इफ यू हैव मल्टीपल यू कैन गिव द मल्टीपल.